Assalamu alaikum. My name is Ibrar Ahmad. My roll number is 5036. Now we discuss topic valence bond theory. Valence bond theory. The main points of valence bond theory are valence bond theory are two important theories of and molecular orbital theory are two important theory of covalent bonding. According to VBT theory, a bond between two atoms is formed. एक bond two atom is formed. A bond between two atoms is formed होगा when a pair of electrons with their spins paired is shared by two overlapping atomic orbitals, and one orbital from each of the atoms joined by the bond. For example, in this diagram figure, the VB view of the formation of the covalent bond in H2. Two hydrogen atoms first separated, then after overlapping of orbitals, they attach each other, and then covalent bond in H2 is formed. The amount the potential energy is lost when the bond forms depends in part on the extent of orbital overlap. Now, therefore, atoms tend to position themselves so the maximum amount of orbital overlap occurs. The fluorine atom has a singly occupied 2p orbital. जो fluorine atom है वो has a single occupied 2p orbital की मदद से बना होता है. It can overlap with one hydrogen, one s orbital. फ्लोरीन एटम एक 1s हाइड्रोजन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा to form single bond in hydrogen fluoride. Now we discuss example ethane molecule. In ethane molecule, overlap of orbitals. In ethane molecule, hybridization of the types of hybridization is sp3 orbitals in the carbon-carbon bond is not appreciable, affected by the rotation of the two CH3 groups relative to each other around the bond. Overlap for CC bond. CC bond के दरमियान जो overlapping होगी वो sp3 orbital overlapping होगी. Now we discuss the nitrogen atom in ammonia. Ammonia में nitrogen atom has one lone pair of electron. अमोनिया में नाइट्रोजन एटम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है. इन HNH बॉन्ड एंगल इज 107 सेंटीग्रेड. HNH बैंड के दरमियान एंगल जो होगा वो 160 डिग्री होगा, 160 सेंटीग्रेड डिग्री होगा. एंड नाउ ऑक्सीजन एटम इन वाटर में ऑक्सीजन एटम दो लोन पेयर रखते हैं ऑफ एंड HOH बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा. मल्टीपल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है. The pi bond are formed from the p orbitals that are not involved in the hybrid orbitals. Pi bonds are formed from the p orbital. Pi bond p orbital की वजह से formed होगा लेकिन are not involved in the hybrid orbitals. Heterocarbons frequently involve pi bonds. Heterocarbon जो होंगे उनमें frequently pi bond involved होगा. The double bond in alkenes is comprised of one sigma and one pi bond. जो डबल बॉन्ड होगा अल्कीन में उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड. द ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइंस
अल्काइंस में वन सिग्मा बॉन्ड होगा और टू पी बॉन्ड्स होंगे. In this figure, show the two double bond in alkenes is compromised. Now we discuss another example, CH2 group. In the CH group in front, if the CH2 group in front was to rotate relative to the one in the rear, the unhybridized p orbital will no longer be alkyled, meaning the pi bond will be broken. इसमें दी जो अनहाइब्रिडाइज पी आर्बिटल वो नॉट लॉन्गर बी एलिकन वो लॉन्गर नहीं होगा, मीनिंग दी पाई बॉन्ड इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक हो जाएगा, ब्रोकन मीन टूट जाएगा. बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन इज अवेलेबल थ्रू नॉर्मल बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग एट रूम टेम्परेचर. After the VBT theory experiment, the basic points are given by the basic frame of the molecule is defined by the arrangement of the sigma bond. मॉलिक्यूल का जो बेसिक फ्रेमवर्क वो डिटरमाइन किया जाएगा बाय द अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड से. Hybrid orbitals are used to form the sigma bond and lone pair of electrons. जो हाइब्रिड बॉन्ड्स हो गए वो सिग्मा बॉन्ड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज होंगे एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स needed by an atom in a structure equal the number of atoms to which it is bonded plus number of lone pair of electron in its valence shell. And the fourth point, when there is a double bond in the molecule, जब डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में होगा वो तो वो कंसिस्ट होगा वन सिग्मा बॉन्ड पे और वन पाई बॉन्ड पे. एंड व्हेन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा वो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और टू पाई बॉन्ड्स होगा.